Good morning, welcome back to Progress with Prachi. This is Prachi Soni, and today I will be talking about class 12th NCRT Human Geography. This book, Fundamentals of Human Geography, and we are on chapter Tertiary Activities and Quaternary Activities, that is chapter number 7. We have already dealt with trade and commerce, types of tertiary activities, in which we covered trade and commerce, we covered transport, we covered communication, we covered services. Next up we have is what are the people engaged in tertiary activities. Today most people are service workers. आज की डेट में हमको पता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं they are service workers. मोस्ट पीपल आर सर्विस वर्कर्स. ज़्यादातर लोग सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं. सर्विस हर सेक्टर में प्रोवाइड कराई जाती है. सोसाइटी के हर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन ऑल सोसाइटीज़. एवरी सोसाइटी में सर्विसेज होती हैं. बट ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक हायर परसेंटेज यानी कि ज़्यादा परसेंटेज ऑफ जो वर्कर्स होते हैं वो सर्विसेज में एम्प्लॉयड होते हैं कंपेयर टू अ लेस डेवलप्ड कंट्रीज. जैसे बोला जाता है कि द बेटर द डेवलप्ड द कंट्री इज़, मोर द पीपल आर इन्वॉल्व इन टर्शियरी एक्टिविटीज़. दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि जितना ज़्यादा आपकी कंट्री डेवलप होगी उतने ज़्यादा उस कंट्री के लोग इन्वॉल्व होंगे इन टर्शियरी एक्टिविटीज़, और जितनी लेस डेवलप होगी आपकी कंट्री उतने कम लोग आपकी टर्शियरी सेक्टर में होंगे एंड मोर विल बी इन्वॉल्व इन प्राइमरी सेक्टर. Now, trend is employment in this sector has been increasing while it has remained unchanged for or decreasing in the primary and secondary activities. तो जो हमने ट्रेंड देखा है उसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि टर्शरी सेक्टर में जो इन्वॉल्वमेंट है, जो पार्टिसिपेशन है, इट इज़ इंक्रीजिंग कंपेयर्ड टू इंक्रीज और चेंजिंग इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. तो there is a possibility that maybe primary or secondary sector में changes ना हो, but then there are changes in tertiary sector. There is a definite increase of the total number of percentage participating in tertiary sector. Some selected examples. First being tourism. The tourism sector is a very big, huge sector. Tourism or is travel. Tourism क्या है? Is a travel जो कि recreation purpose के लिए आता है. So travel, so you can do anywhere. But when you are traveling for recreation purpose, then it is known as tourism. It has become the world's single largest tertiary activity in total. So सबसे बड़ी tertiary activity जो है वो आपकी tourism sector है. In total registered jobs, टोटल 250 मिलियन लोग टूरिज्म सेक्टर में इन्वॉल्व है. एंड टोटल रेवेन्यू जो भी जनरेट होता है दैट इज अराउंड 40% ऑफ द GDP, टोटल GDP विच इज कमिंग फ्रॉम टूरिज्म सेक्टर. सो अगेन इट इज़ वन ऑफ द वेरी ह्यूज इंडस्ट्री, not just in terms of jobs but also in terms of the revenue it is generating, the amount it is generating, the income it is generating. So besides many local person, when you are going to some place, any place, for example you're going to Rishikesh, so not just the local people, the localites of Rishikesh, but there are a lot of people employed in services like accommodation. You will get meals, there is a chef, you will have transport services, entertainment services, then you have special shops for serving the tourists. So all these things, there are a lot of different sectors and a lot of different people are involved in these different sectors. Tourism fosters the growth of manufacturing industries. Because of tourism, manufacturing industries are developed. Because whenever, for example, I took an example of Rishikesh. So when you're going to Rishikesh, now you will purchase something or the other which is produced locally or which is a speciality of Rishikesh. In that case, the manufacturing industry of Rishikesh will get a push. Retail trading, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, रिटेल ट्रेडिंग, वहाँ की जो शॉप्स हैं वो फेमस होती हैं. क्राफ्ट वगैरह में लोग इन्वॉल्व होते हैं. सुविनियर्स जो आप खरीद के लाते हो. इन सम रीजन टूरिज्म इज सीजनल बेसिक बिकॉज ऑफ द वेकेशन पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन फेवरेबल वेदर कंडीशन. कुछ एरियाज में, कुछ जगहों पर जो टूरिज्म है दैट इज सीजनल, विच मीन्स नॉट एवरी टाइम. ना अब गोइंग टू अ थार डेजर्ट, अगर आपको थार डेजर्ट जाना है, डेजर्ट में वेकेशन करने जाना है, यू वुड नॉट प्रेफर गोइंग इट इन मे एंड जून, राइट? Although it's a desert, वो ऑलमोस्ट साल भर में भी गर्म रहेगा, but then May June is the extremities, right? You won't prefer going there. Similarly, Ladakh, almost for 4 months Ladakh is closed because there is no way to go in Ladakh. So that is what they mean by
seasonal tourism, because then there are places where you cannot go in certain seasons because of the climate conditions. But many regions attract visitors all the year round, but there are certain places which attract visitors all year. Then certain tourist regions, the warmer regions around the Mediterranean coast. Mediterranean coast के आसपास की जो जितनी भी countries हैं, your Spain, Portugal, Italy, then the countries in North Africa. So all the countries around Mediterranean coast and the west coast of India, the western coast of India, are some of the popular tourist destinations in the world. Goa, Gujarat, Mumbai, these are certain tourist destinations of the world. Other include winter sports region, and there are certain winter sports region found mainly in the mountainous areas and various scenic landscape and national parks which are scattered. Historic towns also attract tourists, दो historic towns होते हैं वहाँ पे भी tourist वगैरह जाते हैं because monuments देखने के लिए, heritage sites देखने के लिए, cultural activities देखने के लिए. So these are certain places which are important for tourism. Next is factors affecting tourism. There are two most important things which affect tourism. First being demand. Since last century, demand जो है holidays की वो बहुत ज़्यादा increase हो गई है. You also realize that after there's a बहुत एक fixed schedule है सबका, सब लोग especially people who are engaged in service sector or not for that matter in any sector. You cannot just choose to enjoy in 1 or 2 days. Weekends apart, you get bored. You get bored with the schedule. So people have developed a tendency to go for a vacation. लोगों को vacation जाने पसंद है, घूमना पसंद है, to spend time with their families. तो last एक century में जो holidays का जो demand है ये increase हो गया है rapidly, क्योंकि लोगों का standard of living better हुआ है, लोगों का leisure time जिसमें वो enjoy करते हैं वो better हुआ है, permit many more people to go on holiday for leisure. और इसी वजह से a lot of people are free to move, to go around and अपना leisure activities enjoy कर सकते हैं. Transport, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्ट जो टूरिज्म को अफेक्ट करता है वो है आपका ट्रांसपोर्ट. डिमांड के केस में जैसे अभी कोविड के टाइम पे कि आपने बात करी होगी, तो पीपल घर पे लोग बैठे बैठे इतना ज़्यादा दे वर फेड अप कि जब जैसे ही लॉकडाउन खुला तो देवर दिस न्यूज़ मनाली में, गोवा में, देयर इज दिस ह्यूज क्राउड, पीपल आर क्राउडिंग दीज प्लेसेस बिकॉज ओके नीड ऑफ वेकेशन. मूविंग ऑन टू ट्रांसपोर्ट, द ओपनिंग ऑफ टूरिस्ट एरियाज. अभी आप टूरिज्म करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रैवल करना है. ट्रैवल करने के लिए यू नीड अ ट्रांसपोर्ट. यू कैन नॉट गो एवरीवेयर, अपना पैरों से चल के तो नहीं जा सकते हो. सो द ओपनिंग ऑफ टूरिस्ट एरिया हैज़ बीन एडेड बाय इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़. तो जब टूरिज्म ओपन होगा तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के लिए एक पुश ज़रूरी है. ट्रैवल करना कार से आसान है अगर रोड के सिस्टम्स अच्छे होंगे. मोर सिग्निफिकेंट इन रिसेंट ईयर्स हैज़ बीन द एक्सपेंशन इन द एयर ट्रांसपोर्ट. हमने एयर ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया है. अलग अलग जगह पे एयरपोर्ट्स खोल रहे हैं, छोटी छोटी फ्लाइट्स, छोटे डिस्टेंसेस के लिए वी हैव स्टार्टेड अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ फ्लाइट्स. फॉर एग्जाम्पल एयर ट्रैवल अलाउज, अभी एयर ट्रैवल के थ्रू आप वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हो कम समय में. और द एडवेंट ऑफ पैकेज हॉलीडेज, और जो पैकेज हॉलीडेज मिलती हैं आपको दैट इज़ 2 days 3 nights और 3 nights 2 days का, या 5-6 days वीक डेज. सो ऑल दीज जो पैकेज हॉलीडेज हैं दिस रिड्यूसेस योर कॉस्ट. जिससे आपकी जो कॉस्ट होती है ट्रैवलिंग की वो काफ़ी कम हो जाती है. मूविंग टू टूरिस्ट अट्रैक्शंस, देन देयर आर सर्टेन थिंग्स जैसे कि क्लाइमेट, लैंडस्केप, हिस्ट्री, आर्ट, culture, economy. These are certain places, certain things which you want to enjoy, and that is why you go to a specific place. अभी गोवा जाने के लिए, गोवा why you going? Because you want to enjoy the beaches. Why will somebody go to Banaras or Varanasi? To enjoy the historic, the religious culture of that place. Why would somebody go to Ladakh? To enjoy the climate of that place. There are certain factors, certain features जिसकी वजह से आप टूरिज्म करते हो. फर्स्ट बीइंग क्लाइमेट. ज़्यादातर लोगों को कोल्डर रीजन्स पसंद होते हैं क्योंकि आप गर्म रीजन में रह रहे हो तो आपको ठंडे इलाके में जाना पसंद होता है. सनी वेदर पसंद है बीच हॉलीडेज़ के लिए. दिस इज कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से इम्पॉर्टेंट है टूरिज्म का सदर्न यूरोप में, मेडिटेरेनियन लैंड्स में.
द मेडिटेरेनियन जो क्लाइमेट है वो एक कंसिस्टेंटली हायर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है बाकी के यूरोप के कंपैरिजन में। ज़्यादा लंबा सनशाइन है, लो रेनफॉल रहता है थ्रू आउट द पीक हॉलीडे सीजन, ज़्यादा बारिश नहीं होती है। पीपल विंटर हॉलीडेज लेते हैं, जो विंटर एरियाज में रहते हैं यूरोप के, दे टेक हॉलीडेज स्पेसिफिकली टू इन्जॉय अ सर्टेन टाइप ऑफ क्लाइमेट। लैंडस्केप, बहुत से लोगों को हॉलीडेज अपनी अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट के पास पसंद है, जैसे कि माउंटेन्स के अराउंड, लेक्स के अराउंड। Yeah, so people like to spend their holidays in the attractive environment, which is often means mountains के around, lakes के around, sea coast के around, and landscape not completely और ऐसे areas जो कि completely man से affected नहीं है। History and art, the history and art of an area have potential attractiveness. Some places which are specific for their history, specific for their art. The history and art of have potential attractiveness होती है। पीपल विजिट, लोग पुराने पुराने जगहों पे जाते हैं, जैसे आगरा में ताजमहल वगैरह देखने आते हैं, पिक्चर्स क्यूट टाउन्स देखने आते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने आते हैं। दे लाइक टू एक्सप्लोर कासल्स, पैलेसेस एंड चर्चेस। नेक्स्ट अप वी हैव इज कल्चर एंड इकोनॉमी। These attract tourists with a penchant of experiencing ethnic local customs को experience करने। ये रीजन टूरिज्म सस्ते चीप कॉस्ट होती है और ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर वेरी पॉपुलर हो गया है। होम स्टेज जो है आजकल, दैट इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, जैसे कि हेरिटेज होम्स है गोवा में, मेडिकर है, कूर्ग है कर्नाटका में। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन टूरिस्ट attractions or features why tourism is preferred, why people choose to travel to a certain place. Medical services for overseas patients in India. Now this is also one of the features of tourism. About 55,000 patients जो हैं USA से वो इंडिया आए हैं in 2005 for treatment. Now because these places have very expensive treatment, बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि उनका ट्रीटमेंट हमसे बेटर नहीं है, but it is very expensive. So this is still a small number compared to the millions of surgeries जो US परफॉर्म करता है अपने हेल्थ केयर सिस्टम में। So 55,000 बहुत कम है जितने ज़्यादा लोग वहाँ बीमार होते हैं, but for India it is a huge number that from a country like USA people are coming to our country treatment के लिए। इंडिया एक लीडिंग मेडिकल टूरिज्म, एक लीडिंग कंट्री की तरह इमर्ज हुआ है। पीपल आर कमिंग टू इंडिया फॉर देयर मेडिकल, अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहे हैं। अभी स्पेशली हमने देखा ड्यूरिंग कोविड, इंडिया हैज़ बीन अ ग्रेट हेल्प टू एवरी नेशन। सो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो पेशेंट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड से डील करते हैं। मेडिकल टूरिज्म से बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं हमारी कंट्री को, जैसे कंट्रीज जैसे कि इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। बियॉन्ड मेडिकल टूरिज्म के अलावा द ट्रेंड इज टू ऑफ आउटसोर्सिंग मेडिकल टेस्ट वगैरह हम बाहर भेजते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन का डेटा बाहर जाता है। हॉस्पिटल्स इन इंडिया, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैव बीन परफॉर्मिंग सर्टन मेडिकल सर्विसेज। जो हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सर्टन मेडिकल सर्विसेज प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो MRIs हो, अल्ट्रासाउंड टेस्ट हो। सो ऑल दीज थिंग्स आर हेल्पिंग द मेडिकल टूरिज्म ऑफ अ कंट्री। ना मेडिकल टूरिज्म, जब मेडिकल ट्रीटमेंट और इंटरनेशनल टूरिज्म कंबाइन हो जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट और इंटरनेशनल टूरिज्म कंबाइन हो जाए, इन दैट केस इट इज़ कॉमनली नोन एज मेडिकल tourism. So next class we would be talking about quaternary activities and culinary activities. Thank you and have a nice day.